आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता, जनरल सेक्रेटरी ऑफ बामरा आरोग्य ट्रस्ट, आप सबका बामरा आरोग्य ट्रस्ट के 9वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस वेबिनार सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। Initially, if we talk about Bamra Arogya Trust, it has started with the Bamra Arogya Kendra in 6 December 2002, based on the healthcare system, that is homeopathy. And till now, we have treated 50,000 of cases of every type of disease from each and every corner of the country. Based on this response, Bamra Arogya Trust was founded on 4th January 2012, based on its 3 targets, that's health, health preserver, and individual. Now coming back to our session, the clinical session of migraine and homeopathy. It's as you know, it's a type of headache, and most commonly it is seen in the world on the 3rd number. And if we talk about the global prevalence, it is almost 15%, more commonly seen in females than males and children. And it has been seen the person who is having history of migraine, they tend to suffer with this problem more frequently. And if we talk about its business, or I would say the global market, the compound annual growth, it is going to be reached $8.7 billion in 2026. Now the question arises that out of spending so much of money, so much of wealth, and so much of time on this particular malady, why this problem is increasing day by day, and what as a homeopath we can offer to this suffering humanity through homeopathy. If we go to our repertory, we see almost 769 medicines are indicated in repertory, and under which we have the rubrics, sub-rubrics, cross-references, and so on. And if we read those rubrics and sub-rubrics, so much of, I would say, distinction is given, that headache, if it is one-sided, left or right, wandering headaches, alternating headaches, associated with other problems. So if we study these rubrics, we always see that we can really heal our patient in a very beautifully and in a very scientific manner, because so much of distinction is given. The patient will be treated as an individual, not as a mass. So the results are really, really increasing, because we have seen and studied our 50,000 patients in our center. The response is really, really good. So I will just show certain cases of migraine, that how homeopathy can heal our patient in a much better way. This is a case of a lady who is a housewife of 30 years of age. She is having average build and height, and mother of 2 children. She's working, not housewife. She's working in MNC. She has consulted for the following complaints. She is suffering with the headache since 15 years, and the head pain which is alternating and wandering, more marked in left side, aggravated noises, light, fasting, mental tension with nausea. And there were so many crops of warts around her neck, armpit since 2015, and few warts were cauterized. There was a pain in her finger joints, right shoulder, knee, which was aggravated, ascending stairs, hair fall. Then her perspiration was very pungent. She was having a lot of heat sensation. Then basically she desired sweets, green chilies, rice, and chocolates. And there is a tendency to gain weight. And when she narrated her past history, she had 2 cesarean deliveries, one miscarriage in 2013, and she took contraceptive pills in 2008.
And in her family history, there was a diabetes, and her grandmother was also having arthritis. When I asked about her psychological status, she said that I feel very detached and sad, sadness with anxiety, which is aggravated, especially in the morning. And she told me that I like to prefer alone and weeps when alone. There is a aversion to everyone, wants to be all alone on the time. And she is very sensitive to hear sad and horrible stories. She is reserved, not able to express herself properly. There was a lot of lack of confidence. She feels people are always judgmental. So I don't trust on anyone. There was aversion to consolation. She always feels forsaken from her parents' side as well as from the husband and the family. Intolerance to injustice, especially to females. And she told ki if someone is not talking nicely to me, I feel very hurt. And there is a fear and thought of snakes, and that is in a three intensity: sympathetic, theorizing. So these plus plus shows the intensity of the symptom. And there is always two contradictory thoughts. She feels ki whenever I'm doing something, I always feel whether to do it or not. It's sort of irresolution she feels. There is a lot of confusion, and she feels dull and lazy. And when I asked her more, she told me, since my childhood, I really want to be independent because I've seen my mother is very dependent on my father and he's very dominating. She does not have any say. So I really want to be on myself. So I worked very hard and studied, and I started working very early. So the prescription was, I have given her Thuja, Calcarea carb, Spigelia, and headaches were better, but not up to the mark. And based on the symptoms, if we study this case, we have seen the headaches are migratory, alternating headaches, and the fear of snakes and the thought of snakes are very intense. So 3 doses of Lactin was given. Then she didn't came. She came after almost, I would say, after 1 year, in 10th of November 2018. She told, yes, I was better for a few months, but again, because I've shifted to Noida, so I couldn't come. And this time she had cauterized her warts, and headache, sadness, and indifference was aggravated. So Natramule 200 was given, and CPO was also given. Then she just continued for only two months, and then she left. And again, she reported in 19th of December, almost after 2 years. She said that I'm experienced a lot of headaches, confusion, two train of thoughts. Two train of thoughts means there is a irresolution. She always feels ki whether to, if she wants to do something, she doesn't want to talk to anybody, but she has to. Then joints pain, aversion to company and conversation. And recently she has joined in Noida, and she has left her family in 2018, and she comes in between and visit her family. So Lactin 200 was repeated, and then she said, after 1 month, my headaches are much better, but there is headache of right side with nausea, keeps on recurring. And she desires chocolates, but now it is being reduced after Lactin 200. Now she told, I'm able to express myself. Then Lactin 1M was given because headache was again recurring. And in 30th of January, she reported, and recently also she came in March. There is no headaches. Overall, she's feeling much better mentally as well as physically. And this is a case of a housewife. She hails from a village. She is of 32 years, housewife, mother of 2 children. She consulted for the following complaints. There is a severe pain in calves, and the pain is more marked in the left calf muscle, which is aggravated bending, evening since 2018.
And basically this pain initially started in her knees and legs, and she's taking calcium supplement and painkillers. And daily she is on painkillers because she tells that pain in her calf, especially the left, is too much that she has to take painkiller. And the head pain, which is periodical, and especially the left sided, in the left temple, and which is exactly started after her marriage. There is a weakness and tiredness, lack of vital heat for 5 years, and face eruptions. There is a dream and fear of snakes, and which is very marked. And she said कि अपनी भाषा में कि मुझे हर टाइम ऐसे लगता है जैसे सांप आ जाएगा, मेरे घर में सांप आ जाएगा, मेरे बिस्तर पे आ जाएगा. And mentally she told कि मेरी जो mother in law थी, she was very strict and I have been tortured like anything. And my husband was in defense, so I have to stay with them for almost 7 years. And then my husband lost his job because he had some head injury in 2013, and there was no support from the family side, so we had separated. Now they are doing their own business. And she has been prescribed Laccan 200 3 doses, and almost exactly after 15 days she told that I felt much better, but once I took painkiller for the headaches and the calf muscle pain. So Laccan 200 one dose was given to her. After 1 month she told my fear of snakes and dreams of snakes are much better, but headache occurred once and it is of severe intensity. So Laccan 1 dose was given, 1 dose, and after this she felt all her pains were in a better position. The pains were not coming. Coryza, she developed coryza, and which was watery with nose obstruction, aggravated dust and cold air. And if we study Laccan has also a higher sensitivity to dust, and the coryza, sneezing, etc. are coming, especially the exposure to dust. So based on that, the potency was raised and 1 dose was prescribed. And then she told, I'm feeling much better, no pains are there. So almost for 2 months there was, everything was fine. Then in this February she came, she told ki I had headache with vertigo, pain lag. So again this dose was repeated, and till now she's enjoying her health. All her complaints are much better. Mentally there is no fear, no anxiety. And she told me ki I used to keep on thinking about my past, about my mother-in-law, that she has tortured me like anything, but now it's not like that. So you can see how beautifully our remedies are healing our patients, because there is always a mental analogy between the physical symptom and the mind symptom. If the mentally the patient is feeling tortured, tensed, they tend to have more complaints, especially the migraine. They are, it's always been triggered by the stress, the tension, or the I would say the guilt or the grief the patient is carrying. So by studying these 2 cases, we can see how patient healing physically as well as mentally. This is a case of again 33 years of housewife. So we can see it is very common in 30 plus females, or I would say I have treated these females in between this age group. She is having 2 children. Then she had a chloasma on her face, that जैसे कहते हैं ना झाइयाँ आ जाती हैं face पे, and her menses is very painful and copious. She is having recurrent wandering headaches कि कभी सर दर्द डॉक्टर साहब यहाँ हो जाता है, कभी वहां आ जाता है, सर में घूमता ही रहता है, और कभी, and there is always a constipation with unsatisfactory stool, and her voice was painlessly hoarse. तो उसके बात करने में भी वो she told कि मुझे बहुत जोर पड़ता है और आवाज भी उसकी ठीक से नहीं आ रही थी. And she told that she is taking 100 mg tablet of allopathic medicine since many years. And in the past history, she had abortion. And mentally,
she told that I felt very disturbed after my father-in-law, which is, I would say, very rare, because emotionally she was very, very attached to her father-in-law. So based on that, we had given some medicine, then followed by the medicine for the migraine. Then irritability, aggravated menses before, short tempered, very particular about cleanliness. She told कि मुझे इतना वहम रहता है सफाई का कि घर में बिल्कुल धूल नहीं होनी चाहिए, और एकदम मैं दिन में 2 बार झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बिल्कुल धूल नहीं होनी चाहिए. And there is a fear of snakes alone and dreams of snakes as well. Vanilla 200 was given as there is an element after the loud one, and she felt much better, but her headache was persisting, and Laccan 200 was given in this patient. And gradually, as you can see the dates, I would not go in details. All her this cleanliness mania, the headaches, the menses, everything was healed very beautifully and in a very short time, almost in a, I would say, 3 to 4 months. Her fears, her dreams, her headaches, everything healed very nicely. And the another case, she's a lady of 27 years old, having 3 children. She had wandering pain her fingers and knee joints. तो she told कि डॉक्टर साहब ऐसा होता है, कभी इस उंगली में दर्द आ जाता है, कभी उस उंगली में दर्द आ जाता है, and it is especially aggravated in the morning when she is closing the hand. And initially the pain started in finger joints with swelling 2 months back, and there was a ringworm on her nails, and heartburn after the lunch, and fear and dreams of snakes were very marked. And she told कि she developed chloasma on her face, back pain, early menses, which is almost 8 to 5 days early, breast heaviness and pain aggravated especially before and after menses. And she told कि ये जो सारी चीजें this she has developed after the tubectomy in 2018. So as you can see that tubectomy does have so much of side effect on a patient. So and in the past history, she told she used multi-load as a contraceptive. So in this case, Lac can also heal her very nicely. 3 doses were given, and she continued her treatment for 3 to 4 months, and all her complaints were better. There was no problem as such. Her fears, her chloasma, everything was fine. So moving into the another case, a lady of 33 years old. She also had so much this wandering one-sided headache since 4 years, and it is especially aggravated by motion, stooping, exposure to sun before and during menses, aggravated vomiting and pressure. Pain heals, aggravated beginning to move, then which is initially started in the right side. Menses are very, very painful on the first day. Then she had a tendency to constipation with retention of hard stool for 2 to 3 days. She told me, Doctor Saab, मैं 2-2 दिन तक जाती ही नहीं हूँ. And there was a warts on her face, and उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, and there was a aversion and aggravation from milk. And mentally, she felt a lot of fear from lizards, cockroaches, snakes, insects, and there is a disgust of uncleanliness. She told कि गंदगी तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ, मुझे उल्टी आती है. So much of disgust was there for the dirty uncleanliness and insects. And even she discussed insects. She cannot see, she fears as well as she feels very repulsive about this insects. Then very she cannot back answer if someone hurts her. कि किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं जवाब ही नहीं दे पाती हूँ, और फिर उसके बारे में सोचती रहती हूँ, दुखी होती रहती हूँ. और she is taking painkillers and L-toxin medicine for her hypothyroidism. And in the past, she had a cesarean delivery.
So I would like to add one thing here, that the patients who are on medications, we always tell them to stop the medication. And especially if they are on the medicine of hypothyroidism, taking for so many years, we taper it off. Like they can take it as an alternate day, then twice in a week. Then gradually all the medicines has to be stopped. And this lady, as she was having right-sided headaches, wandering headaches, and as we have learned that in sanguine area there is a exposure pain, especially coming after the exposure to sun, right-sided headaches, vomitings, and wandering pains, right-sided complaints. But there was very slight relief. Then lac def was also given. I repertorized the case, but that was also not very helpful. Then again I re-repertorized the case, and she had been given lactent 200. Then after that it was again repeated, and in the end all her complaints were much better within a span of, I would say, 5 months. That she had started in 18th of July 2020. Now she reported on 17th of February, and again she came in March. Everything is better. All her fears, pains, mentally she felt so much better, and that cleanliness mania is much better. She told कि मैं साफ रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है घर को साफ रखना, पर जो मुझे हमेशा एक वहम बना रहता था, अब वो नहीं रहता है. So again, this case, she is a female of 39 years old. She's slightly obese and teacher by profession. And she is suffering with the recurrent severe headache since 2001. So you can imagine almost 20 years. And she is on painkillers, regularly she's taking painkillers, and her headaches are really, really severe. So she was like कि डॉक्टर साहब मैं तो इतना तंग आ चुकी हूँ कि मुझे तो लगता है अब तो ये मेरे साथ ही जाएगा. And the problems were, there was a wandering headaches accompanied with nausea and acuteness of smell. कि जब भी मुझे सर दर्द होता है, मुझे खाने की जो स्मेल है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है. अगर कहीं दूसरी जगह भी खाना बन रहा है, किचन में बन रहा है, बाहर से कहीं खाने की स्मेल हो रही है, या मुझे खाना भी दिख जाए, तो आई जस्ट कांट टॉलरेट इट. और उस स्मेल से मेरा सर दर्द और तेज हो जाता है. और खाने की नहीं, कोई भी जो स्मेल है ना, जो भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, उससे मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है. एंड उसके जो फेस पे फ्रेकल्स थे, एंड वो झाइयां जिसे हम कहते हैं, क्लोइज्मा ऑन हर फेस, and few warts were also there. She told ki I like salt, spicy food and cold drinks, ki मीठा इतना पसंद नहीं है, नमक तेज ही लेती हूँ. And she told कि अगर कोई मेरी बात ना माने तो I get very, very angry. And there is a fear of animal in general. Specifically she don't tell कि मुझे किसी खास जान, she told कि हाँ मुझे normal हर जानवर से ही डर लगता है. And she had been given colchicum 30 water potency for 30 days daily, once in a day. So water potency. And she reported almost after 1 month, and she told कि my intensity and frequency of headaches are really reduced, but they keep on coming. So potency was raised to 200. Only 3 doses were given. And almost after 1 month, she told कि जो सर दर्द मुझे daily होता था, it has just occurred thrice. Or she has stopped all her painkillers, and she has tapered her medicine of Eltroxin also. So again, this medicine was repeated because headache was coming again and again. And she felt much better. And I analyzed the case, because if we see, the headache is a periodical disease. And after this periodicity is over, we need to go for the polychrist, for the, I would say, the polychrist well-established medicine to heal the patient in a more, I would say, permanently. So as the CPR is complementary of colchicum and covering all the symptoms of cloisma, freckles, then sensitivity to the fragrance and sensitivity to the smell of food, everything was covered by CPR. So CPR 200, then again, after the 2 months, CPR 1M was given, and she was feeling much better.
Again, then she again reported in 17th of January. She told कि इस बार मुझे सर दर्द ज्यादा रहा और खाने की से जो मेरी स्मेल की जो सेंसिटिविटी थी वो भी मुझे ज्यादा लगी. So I gave her colchicum 1 mg 1 dose. And after 1 month, she told that I felt much better. Headache occurred, but only once, but it was of severe intensity. So again, this dose was repeated. And in 10th of March, she came to me and she was feeling much better. Everything, even her this freckles and chloasma is also reducing. So she may take, because the headache is since 20 years. So it is going to take time, maybe 1 year or 2 year. But as you can see, the response of homeopathy is so fast, because normally it's a myth कि होम्योपैथी तो धीरे काम करती है जी, टाइम लगता है, बीमारी को बढ़ाती है, यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेशेंट्स आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी परेशानी बढ़ेगी तो नहीं, मैं इतनी पेन किलर खा रही हूँ, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी परेशान हो चुके होते हैं. बट थ्रू आवर एक्सपीरियंस वी हैव लर्न दैट होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है. If we can say that it is the most fastest medicine I have seen and I have experienced in my patient, कि as soon as the patient takes the medicine, the action starts. But we have to really see कि जो patient इतने सालों से पेन किलर्स पे है, इतने सालों से और मेडिकेशंस पे है, जब उस मेडिसिन को हम टेपर ऑफ करते हैं तो नेचुरली वो सिम्टम्स एक टाइम के लिए बढ़ भी सकते हैं. बट इट इज नॉट कि दवाई से कुछ उसका कोई लेना देना है, दवाई ने बढ़ा दिया या दवाई ने निकाल दिया. Actually, the patient is experienced because he or she is not taking painkillers. So this way we can taper the medicines, the medicine of hypothyroidism, of diabetes and everything. But ultimately our aim should be that patient should not take the other medicines, and it should be strictly prohibited. Then and then we can appreciate the homeopathic treatment. Then and then we can say, yes, homeopathy can manage each and every type of disease. This will be our true healing. It's not that कि ठीक है जी आप naturopathy भी करते रहिए, आप अपनी और medicines भी लेते रहिए, आप ये भी करते रहिए, homeopathy भी लेते रहिए. This should not be the way. And we have seen in our patient कि they are really happy कि डॉक्टर साहब मेरा तो उन दवाइयों से छुटकारा आपकी छूट गया, उन 3 पुड़ियों से मुझे इतना अच्छा लगता है, अब आप मुझे 3 से ज्यादा देना ही नहीं. ऐसे पेशेंट्स को वो बोलते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हमें डेली देनी है, 3 बार देनी है, 4 बार देनी है, कोई जरूरी नहीं है. तो every case is different. Here I'm not saying कि only 3 doses will heal the patient. It depends. Sometimes we have to give once or twice a day, depending on the case. So moving to the next case, this lady of 20 years of age consulted on 22nd of February. And she developed scanty and delayed and clotted menses since January 2018. And there was a face discoloration with eruptions, hair falling, then episodes of recurrent burning urination, lack of stamina, always feels tired, then hemorrhoids painful with occasional bleeding, aversion and aggravation from milk since childhood, desire spicy food, pepper, both green and black. And she had been married in 27th of April 2014. And there was a spontaneous abortion after lifting the weight in 2015. And so she has to go for the abortions. Then what happened in 2017, her husband died in accident. So again, she induced abortion. And there is a family history of diabetes in her father. Then I've given her many medicines, but it was not very satisfactory. But there was 2 layers, because as you can see, 2 abortions was there. So CKL was given to her
to remove that layer of ailments after abortions, that clotted, scanty, and these type of menses, and that her menses was completely better. But she was complaining of this recurrent, I would say, this burning urination, headaches. And so I again asked her in details. Then she revealed that she has been very competitive since beginning. She was topper, और वो क्लास में किसी से बात नहीं करती थी, बस उसको अपनी पढ़ाई से मतलब था. बट शी हैज टू सी कि उसके ऊपर कोई ना जाए, उसको हमेशा क्लास में टॉप करना होता था. तो बट टिल 5th grade शी वाज नॉट सीरियस. एंड दैट टाइम उसको ये प्रॉब्लम थी कि उसको बार बार सर दर्द होता था, और पढ़ाई के लिए तो उसको ऐसा था कि अगर उसका एग्जाम है तो अगले दिन पहले दिन उसको नींद भी नहीं आएगी, पूरा पूरा रात बैठ के वो पढ़ती रहती थी. एंड शी इज लाइक कि मैं रटती ज्यादा थी, रटते रहना है, और मुझे ये था कि नहीं, मुझे हमेशा फर्स्ट ही आना है. एंड आई यूज्ड टू बी, शी टोल्ड दैट आई यूज्ड टू बी वेरी जेलस कि किसी के भी अगर मेरे से नंबर ज्यादा आ जाए तो. एंड बेसिकली शी इज रिजर्व्ड, देयर इज नो फ्रेंड्स, एंड still now she is working in a company, and but also she is competitive. Then she is washing hands frequently. She told कि 10-12 बार तो डॉक्टर साहब मैं हाथ धोती ही धोती हूँ. अभी का आप छोड़ दीजिए कि कोरोना के चक्कर में लोग ज्यादा ही हाथ धो रहे हैं, बट if a normal person is washing hand 10 to 15 times daily, obviously it's a washing mania. Then fear of rats. Then she revealed that कि मेरे को बार बार सांप आते हैं सपने में. कई बार मेरे ऐसा लगता है चारों तरफ सांप ही सांप घूम रहे हैं. सो देयर यू कैन सी एज अ होल कि पेशेंट में जो सबसे ज्यादा जो उभर के आ रहा है, इट इज द एंटिसिपेटरी एंजाइटी, इट इज द कॉम्पिटिटिवनेस इन हर, इट इज द हार्ड वर्किंग नेचर, द रिकरेंट वन साइडेड हेडेक्स, wandering headaches, then the washing mania you can observe in the patient, and the dreams of snakes and fear of rats. So based on this, I prescribed this Laccan. I've written CKL 200 because CKL 200 in one was prescribed because she had that layer of ailments after abortion. Her menses were disturbed, so her menses re-established in a proper way. Then after that, this periodical disease, because there you can see the two dissimilar diseases are there. One is the ailments after abortion, though Laccan also covers ailment from or never well seen after abortion. But I have found, and we have seen, that CKL is more effective, especially the menses are scanty, offensive, clotted, or copious. And it was being followed by Laccan 200, and then 1M was 200 was given twice, and then 1M was given, and this medicine healed her remarkably. She told कि अब मुझे ज्यादा शांति लगती है, अब मुझे इतनी चिंता नहीं होती. ठीक है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ, पर जो एक मुझे हमेशा एक दिमाग में टेंशन रहती थी, क्या होगा, मुझे एक एंजाइटी रहती थी वर्क को लेके कि कोई मुझे निकाल ना दे, मुझे टॉप पर रहना है, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए. शी इज लाइक कि ठीक है, अभी भी मुझे लगता है कि बिकॉज शी इज अ विडो, मुझे आगे का अपना करियर सेटल करना है, बट नाउ आई फील देयर इज अ मोर क्लैरिटी इन हर माई माइंड. So we have seen these 7 cases. The patient is telling her physical complaints, and it is very much closely related to the mind symptom. And if we talk about the case handling of migraine, it's a periodical and dissimilar disease. So we can't treat this disease through our constitutional medicine. अगर हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे कि ठीक है, पेशेंट तो परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल कैलकेरिया का पेशेंट लग रहा है या साइलिशिया का लग रहा है, लाइक ये, बट आई हैव सीन वी कैन नॉट क्योर दैट पेशेंट जब तक कि वो जो पीरियोडिसिटी है डिजीज की वो ठीक ना करी जाए. उसका जो डिसिमिलर, जो यू सी अ लेयर ऑफ डिजीज कि एक 7 हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं बेसिक. वी हैव द लाइकोपोडियम, साइलिशिया, कैलकेरिया कार्प, Calcarea fos, and we have, I will give that list maybe in the another section. After that we have the well established polychrist medicines, जिसमें करीबन आई थिंक हमारी 70 के आसपास है. उसके बाद हमारी
बहुत सारी और मेडिसिन हैं। तो उसमें हमें ये देखना है कि पेशेंट आ रहा है, वो उस पर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको इतने वैक्सीन दे दिए जाते हैं, या उसको और जो प्रॉब्लम्स है एक वो वहीं पे लेयर क्रिएट हो जाती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, और लेडीज में तो खासकर अबॉर्शन की एक, ज्यादातर लेडीज में मैंने देखा है अबॉर्शन है, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली हैं, या अब्यूज ऑफ मेडिकेशंस है, वो एक लेयर आ गई, या फिर मलेरिया है, या कोई और डिजीज है। तो जब तक हम उस लेयर को नहीं हटाएंगे, जब तक हम उस लेयर को नहीं ठीक करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो कोई भी केस आता है, वो माइग्रेन का है, वो अस्थमा का है, या कोई भी डिसिमिलर डिजीज है, पहले हमें उसकी लेयर को हटाना पड़ेगा, और फिर उसको पूरा क्योर करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन. So this, first of all, we have to really deal with this periodical and dissimilar disease with the similar medicine based on the symptom similarity. Then in migraine we have to see the modifying factors. I mean एग्रेवेशन किससे हो रहा है, एम्बुलेशन किससे हो रहा है. कुछ किसी लोगों को धूप में जाने से होता है, किसी को ठंड में जाने से होता है, किसी को ट्रैवलिंग से हो रहा है, किसी को गुस्से, कई पेशेंट बोलते हैं कि जैसे मुझे गुस्सा आता है मुझे सीवियर अटैक आता है, कुछ हिस्टेरिकल होते हैं. तो वी हैव टू सी. या फिर बहुत से पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब से मेरा ऑपरेशन हुआ, जब से मैंने ये दवाई ली, या जब से ये कोई ऐसा खास एपिसोड हुआ, उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई. और सर दर्द में आराम कैसे मिलता है, लेटने से मिलता है, चलने से मिलता है. तो ये जो सारे रूब्रिक्स हैं ये अपनी रेपर्टरी में दिए हुए हैं. तो जब भी माइग्रेन का कोई भी केस आता है, उसकी जितनी हम डिटेल ले सकते हैं हमें लेनी चाहिए, कि उसकी मोडालिटी क्या है, वो सरदर्द किससे बढ़ रहा है, किससे घट रहा है, ठंड से बढ़ रहा है, गर्म से बढ़ रहा है, किस, या फिर कोई और मेंटल फैक्टर है. देन कैरेक्टर ऑफ पेन क्या है, कैसा है, मतलब किस तरीके का सरदर्द, एक साइड हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है, पूरे सर में हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग हेडेक्स है, या फिर वॉन्डरिंग हेडेक्स है, कितने दिन के लिए रहता है. तो ये भी रूब्रिक अपनी रेपर्टरी में दिया हुआ है कि अगर सरदर्द एक दिन के लिए रह रहा है, 2 दिन के लिए रह रहा है, 3 दिन के लिए रह रहा है, कैसे उसका ऑनसेट है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, यू नो, ऑल स्पेसिफिकेशन हैज टू बी देयर. तो जितना हम पेशेंट का अच्छे से केस लेंगे, जितनी हम डिटेल उसकी कैरेक्टर ऑफ पेन के बारे में जानेंगे. अब हेडेक का भी जैसे पेशेंट बोलता है कि ऐसे मार लगता है कोई हथौड़े मार रहा है, जैसे हैमरिंग हेडेक्स है, या कोई पेशेंट आके लोकल लैंग्वेज में बोला कि डॉक्टर साहब चब चब कर रहा है. Chab is pulsating pain, you know. So these character of pain is very important in the case taking, and this would help in our prescription. Then associated symptom, mental symptom. If you see, like अभी हमने ये जो 6-7 केसेस देखे, तो इसमें ज्यादातर पेशेंट्स में हमने लेक्टिन दी है, और उसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें क्या सबसे मार्क था, अल्टरनेटिंग हेडेक्स. और हर पेशेंट में there is a fear of and dreams of snakes, and you see the washing mania, the OCD is there, you see the competitiveness, the hard working. So there is always a link, you would say, in a physical symptom and the mind symptom. So this way we can take our case and heal our patient in a proper way. Then causative factors, लाइक अभी एक केस में था कि उसको ट्यूबेक्टोमी जब से उसकी वो हुई, या बहुत सी लेडीज आती हैं जो वो बोलती है कि डॉक्टर साहब जब से मेरी डिलीवरी हुई है मेरा तो सरदर्द ही ठीक नहीं होता, जब से मेरा अबॉर्शन हुआ है ये मेरा सरदर्द ठीक नहीं होता. या बहुत सी लेडीज है जिनके फाइब्रॉइड्स हैं, या ब्लीडिंग बहुत रही है, उसके बाद वो बच्चेदानी निकाल दी जाती है, सो एलिमेंट आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी, और मे बी सम अदर डिजीज है. सो these factor has to be studied. They have to be considered in a proper way, and we have to really take the each and every detail of the patient. And based on the 500 cases of Bamra Arogya Trust, I've studied and I found that कि जितने भी हेडेक के केसेस आए हैं 70% उसमें माइग्रेन के केसेस हैं. एंड सबसे ज्यादा जो कॉमन जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं वो 25 से लेके 45 के बीच में सबसे ज्यादा आ रहे हैं. गर्ल्स में भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स में भी आ रहे हैं. तो स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट्स आए हैं जहाँ पे
पेशेंट को बहुत ज्यादा एक कम्पिटिटिव फीलिंग रहती है कि, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज रहती है. सो वी हैव सीन, एंड मीनोपॉज के बाद भी बहुत से पेशेंट्स में माइग्रेन आता है, बट जो मिडिल एज है वो सबसे कॉमन है. और अगर हम रेशो की बात करें तो इनफैक्ट 500 केसेस में 80% जो केसेस हैं वो फीमेल्स के हैं. फीमेल्स में ज्यादा माइग्रेन मिला है. तो अगर हम, जैसे अभी हमने पहली वाली स्लाइड में बात किया था कि लगभग 25% फीमेल्स, और मेल्स में जो है वो 8 कितना, आई थिंक 8% था शायद. लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि फीमेल में ये रेशो कहीं इससे ज्यादा है. एंड ट्रिगरिंग फैक्टर की अगर बात करें तो जो फैमिलीज में अगर मदर को माइग्रेन है तो आई हैव सीन कि उसके बच्चों को जरूर होगा. बहुत सी है, जैसे हमारे पास फैमिलीज आ रही है 8-8 10-10 साल से, वो उनके पेरेंट्स आ रहे थे, अब बच्चे आ रहे हैं, अब आगे और आ रहे हैं, तो उनके बच्चों में वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है. देन इमोशनल ट्रॉमा, की कुछ किसी की डेथ हो गई, कोई ब्रेकअप हुआ, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ, या फिर बहुत ज्यादा हैरेसमेंट है घर पे, इन लॉज का है, या फिर खुद हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती. सो ये ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं. झगड़ा हो गया, पेशेंट बोल नहीं पाया, इंसल्टेड फील किया. देन रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स, जैसे वही है एज आई वाज टॉकिंग कि जैसे अबॉर्शन जो सबसे बड़ा कॉज है, कि उसके बाद माइग्रेन बहुत लेडीज में आता है. इनफैक्ट मतलब आई मीन वी आर नॉट रियलाइजिंग, बट आई हैव सीन इट कि अब जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, अबॉर्शन इज सो कॉमन. उनको इतना आसान लगता है लेडीज को कि ठीक है, गोली खा ली, अबॉर्शन करा लिया. बट इट इज द बिगेस्ट शॉक टू द सिस्टम, बिकॉज इफ यू सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द होल बायोलॉजी चेंजेस. पूरा सिस्टम एक नई लाइफ की तैयारी करता है, और जैसे ही गोली ली जाती है या अबॉर्शन इंड्यूस करते हैं, इट इज द बिगेस्ट शॉक टू द लेडी. रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे तो होता ही है, इमोशनली, spiritually she is, I would say, agitated, and you can see the symptom, the irritability, the anger, the sadness, the depression, the menstrual disturbances, everything is disturbed. And the periodicity is marked. It is not very clear, I would say. पेशेंट बोलता है कि मुझे कभी कभी 2 दिन में हो जाता है, कभी 1 हफ्ते में होता है, कभी 15 दिन में होता है. तो इट इज वेरी इरेगुलर. उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि क्लैरिटी इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज वो इतने पेन किलर्स, इतने इंजेक्शंस उन्होंने खाए होते हैं, और इतनी वो एक, आई वुड से कि डिजीज लेयर के साथ हमें एक और लेयर ट्रीट करनी है, वो है abuse of painkillers, abuse of antibiotics, abuse of other system of medicine. तो वो एक merged picture आती है. तो कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही मेडिसिन दें, कि जैसे मैंने अभी इसमें लैक्टन दिया, मे बी इन अदर सेक्शन विल ट्राई टू सी कि कई बार हमें 2 या 3 मेडिसिन भी देनी पड़ती है माइग्रेन के केसेस में, कि एक लेयर हटी, फिर दूसरी हटी, फिर तीसरी, पिक्चर भी चेंज होती है. तो periodicity, because when we talk about the migraine, it is a periodicity just like the malaria, but वो इतनी क्लैरिटी से नहीं आ रहा है पेशेंट्स में, बिकॉज वो क्लैरिटी हो गई नहीं, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मेडिकेशन. देन अगर हम अपनी रेपर्टरी की बात करें कि ये रूब्रिक्स भी दिए हुए हैं, और पेशेंट में भी वी हैव ऑब्जर्व कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब, जब मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, या सांस की दिक्कत होती है, या खांसी जुकाम होता है, तो मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद फिर वापस आ जाता है, या फिर कोलाइटिस के साथ, या फिर और गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस के साथ, या फिर और मेंटल सिम्टम, कि मेंटली एक डिप्रेशन है, सैडनेस है, इरिटेबिलिटी, एंड दैट फिर पेशेंट जैसे ही उसको ठीक लगता है तो उसको हेडेक्स हो जाते हैं. देन एसोसिएटेड भी हो सकते हैं, कि पेशेंट बोलता है कि जब भी उसको ये सर दर्द होता है, मेंटली उसको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं. देन एसोसिएटेड सिम्टम्स, कि उसकी कोई किसी की लाइट से बढ़ता है, किसी की साउंड से बढ़ता है, किसी को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से बढ़ता है, और जनरली नोजिया एंड वॉमिटिंग सबसे कॉमन है. और पेशेंट जनरली ये कहता है कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं सर दर्द होता है, या तो मुझे उल्टी हो जाती है, मुझे जबरदस्ती उल्टी करनी पड़ती है, तो मुझे सर दर्द में आराम मिलता है. तो ऐसे पेशेंट बोलता है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव गिवन सैंग्विनेरिया, बट सरप्राइजिंगली सैंग्विनेरिया, स्पाइजीलिया, दे
they are acting as a palliative, and lac and another deep acting medicines have really healed the patient beautifully. But this shows that level of health is going down day by day. तो अब जो medicines, even I would say रस्टॉक्स, जैसे पहले हम खांसी जुकाम के लिए उनको रस्टॉक्स देते थे, बहुत अच्छा काम करती थी 15 साल पहले तक, अब नहीं करती. तो जो लेवल ऑफ हेल्थ की हम बात करें, जो रेडिएशंस का इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि जो अब प्लांट रेमेडीज की हम बात कहते हैं, या जो मेडिसिन इतनी डीपर नहीं जाती, वो पेशेंट को हील नहीं कर पा रही है. और ये जो मैंने यहाँ केसेस दिए हैं, इनमें बहुत से केसेस में आई हैव गिवन सैंग्विनेरिया, आई हैव गिवन स्पाइजिलिया, या एक दो और मैंने जो मेडिसिन दिया जो स्पेसिफिक है, पर उतना रिस्पॉन्स नहीं आया है. तो वी हैव टू रियली थिंक कि जो हमारा जो लेवल ऑफ हेल्थ है वो कितना अब नीचे जा रहा है, कि जो मेडिसिन हैं वो शॉर्ट एक्टिंग ही रहती है. तो वी हैव टू रियली study our materia medica in detail, and we should think about the deep acting medicines. And the observation जो मैंने अभी आपसे काफी सारे तो मैंने डिस्कस ही किए हैं कि जो माइग्रेन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत गहरा संबंध है. 90%, आई वुड से 99% लेडीज में अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उनके मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होगा ही होगा, और देयर मे बी डिस्टर्बेंसेस इन हर सेक्सुअलिटी. नाउ हाउ, अगर हम मेंसेस की बात करें तो मेंसेस अर्ली हो सकते हैं, सप्रेस्ड हो सकते हैं, या कई पेशेंट्स में जैसे लोग आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने ना वो घर में पूजा थी, जब से मैंने वो मेंसेस रोकने की दवाई ली उसके बाद से मेरे मेंसेस गड़बड़ हो गए और मुझे सर दर्द रहने लग गया. या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि जैसे ही गर्ल्स को मेंसेस शुरू होते हैं उस टाइम दे टेल कि जब से मेरे मेंसेस शुरू है मुझे प्रॉब्लम है ड्यूरिंग मेनोपॉज, और कॉन्ट्रासेप्टिव और ओसी पिल्स. तो 90% लेडीज में आई हैव सीन जिन्होंने भी पास्ट में जिन्होंने भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आती है हेडेक्स की, या फिर जैसे इंड्यूस्ड जो अबॉर्शन होता है मेडिसिन से उसके बाद बहुत इफेक्ट्स आते हैं. देन आफ्टर अबॉर्शन सर्जरी, सिजेरियन डिलीवरी, स्टेरेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. सो दीज आर द मेन कॉजेटिव फैक्टर आई हैव नोटिस्ड, आई हैव स्टडीड इन दीज 500 cases. And the second biggest reason is the abuse, and especially I would say in females it is the abuse both mental as well as physical. And ailments after marriage, we have the rubric in our repertory. So marriage ailments after means they experience a lot of suppression, the insult, the mortification, so they tend to develop these type of headaches. And this then rape and molestation, especially in children, if rape has occurred or this molestation is there. So in Lacan I would discuss in Lacan what happens. It's a very important medicine for the rape, especially the sexual abuse in children, even in females. And after that they develop that disgust, that other symptoms of this type of problem. Then the suppressed sexual desire, and surprisingly more than rape, molestation and this abuse of sex, this suppressed sexual desire is now more I would say noticed in females. They tells ki generally कि जो मेल्स में जो एक सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं, दे आर the cases are increasing remarkably. So out of shame वो नहीं बोल पाती हैं, but जब उनसे डिटेल में बात करते तो she tells कि नहीं डॉक्टर साहब उनका तो शुरू से ही ऐसे है, it's like ठीक है बच्चे हो गए अब चल रहा है, but out of shame, और या कई बार क्योंकि because they are in a family they cannot talk about that. So I have seen कि जहाँ पे भी repressed और suppressed sexual desire है, both in males and females, they tend to develop this migraine type of pain.